भाई वकील साहब, रेगुलेशन की बात अलग है। आप मिल प्रभावशाली थे, आपको बुला लिया इंटरव्यू के लिए, चलिए। नहीं आएंगे तो उनको घर थोड़ा ना बुलाने जाएंगे, बहस शुरू करिए। मिलोड ये पढ़िए तो इसको जरा, इसको इतने अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ये पढ़िएगा ना, उसमें पूरा कारण दिया हुआ है। या तो विज्ञापन निकाला गया था या रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए गए थे। पहली रिक्वायरमेंट ये है, इनमें से किसकी पूर्ति आपने की? वाइट P3 मिलोड आई वाज कॉल्ड फॉर अरे भाई वो तो पढ़ देख लिया, आप हमारी बात का जवाब तो दें वकील साहब। 30 साल कैसे होगा आपको नौकरी करते हुए? और पूर्व जन्म की नौकरी जोड़ दी गई है क्या? चलिए। नहीं आएंगे तो उनको घर थोड़ा ना बुलाने जाएंगे, बहस शुरू करिए। मिलोड वाइट एंड एक्सेप्ट P2 मिलोड द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट जी। in the department of botany मिलोड बॉटनी? botany प्राणी शास्त्र को तो मेरे ख्याल से जूलॉजी बोलते हैं, बॉटनी को वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। पढ़िएगा P2। yes तो प्राणी शास्त्र तो जो होता है वो biology जूलॉजी होता है, बायोलॉजी नहीं, जूलॉजी होता है। मिलोड और वनस्पति शास्त्र जो है that is बॉटनी होता botany है। बॉटनी में नहीं, जूलॉजी में थे। zoology जी so he was appointed the technician मिलोड जी later on मिलोड the selection committee जी that was constituted and selected the present petitioner जी। for the post of assistant मिलोड कहाँ है वो? अनेक्ष P3 में कैंडली सीन मिलोड P3। विभागीय स्थायी चयन समिति के समक्ष उपस्थित के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर चयन हेतु। यस मिलोड हाँ, अपने साथ शैक्षणिक योग्यता इतना इतना तथ्य लेकर देन अवश्य आवे। P4 मिलोड हाँ, P4। स्वीकार तो कैटलॉगर आप पढ़ के नहीं आए हैं इसको, ये तो स्थगित की गई है, रिलेवेंट बताइए ना। मिलोड Annex P11 is the order मिलोड by which the petitioner has been ordered to be terminated भाई वेयर इज द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन? मिलोड Annex कब P कब हुआ नियमितीकरण इनका? he was regularized on 17/8/98 मिलोड by Annex P7 हाँ जी। on the क्या लिखा है recommendation इसमें? of प्राणी शास्त्र विभाग में संचित दैनिक वेतन पर कार्यरत इतने को के नियमितीकरण के प्रकरण में समिति द्वारा की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए उन्हें प्रयोगशाला तकनीशियन इतने इतने देव से नियमितीकरण स्वीकृत किया जाता है। ठीक है। P7 इज द ऑर्डर ऑफ रेगुलराइजेशन। मिलोड P7 ठीक है। फिर then Annex P8 में kindly seen मिलोड जी। some complaint was made हाँ, by one of the person who ultimately withdrew that complaint तो क्या हो गया? वो तो फंक्शंस ऑफ इशू था, शिकायत करके खत्म हो गया। जैसे आप रिट ऑफ क्यू वारंटो लगाते हैं, मिलोड आपने लगाई, आपका सूचना देने का काम खत्म हो गया कि फला फला व्यक्ति नियम विरुद्ध तरीके से पद धारित कर रहा है। मिलोड इट इज नाउ बिटवीन द कोर्ट एंड दैट पार्टी। मिलोड सिमिलरली वंस द he कंप्लेंट, withdrew the complaint हाँ, मिलोड ही मे हैव विथड्रॉन द कंप्लेंट। thereafter मिलोड ये पढ़िए तो इसको जरा, इसको इतने अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ये पढ़िएगा ना, उसमें पूरा कारण दिया हुआ है। श्री स्वदीप श्रीवास्तव के लैब टेक्नीशियन के पद पर नियम विरुद्ध नियमितीकरण किए जाने संबंधी इस सचिवालय में प्राप्त शिकायत पर विश्वविद्यालय के तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई। उपलब्ध जानकारी के आधार पर परीक्षणोपरांत प्रकरण में निम्नलिखित अनियमितताएं होना प्रथम दृष्टया पाया गया है। जी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित विश्वविद्यालय के नियम के प्रावधानों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग का निम्नतम वेतनमान में नियुक्ति पद विज्ञापित करने तथा अथवा रोजगार कार्यालय से नाम बुलाने के पश्चात खुले चयन द्वारा की जाएगी। जी कुलपति द्वारा चयन बताइए, समिति कहाँ है आपका विज्ञापन? विज्ञापन कहाँ है? Lord, I was called for interview on my application नहीं submitted. भाई वकील साहब, रेगुलेशन की बात अलग है। आप मिल- प्रभावशाली थे, आपको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। Lord, Where along is, with you are required to show either of the twin requirements that या तो विज्ञापन निकाला गया था या रोजगार कार्यालय से नाम बुलाए गए थे। पहली रिक्वायरमेंट ये है, इनमें से किसकी पूर्ति आपने की? white P3 में Lord, I was called for अरे भाई वो तो पढ़ देख लिया, आप हमारी बात का जवाब तो दें वकील साहब। I was already working on on daily wages में Lord. What I'm asking you, you are not, by avoiding my questions, you will not be able to get anything. चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ,
फिर क्या हुआ? And my lord, the complaint that was withdrawn हाँ void annexure P10, my lord. जी And P11 is the order impugned, my lord, by which by the office of the chancellor, जी I was ordered to be removed from service. जी So my contention is that I have already worked for about 30 years, my lord. जी जी And क्या thereafter स्टे ले लिया था आपने यहाँ से? क्या stay स्टे था क्या हाई कोर्ट से आपको? उसकी जानकारी नहीं। तो वो 30 ईयर्स कैसे हो गए आपको? बिगर स्टे के 30 ईयर्स कैसे हो जाएंगे? On 1911-95, my lord, I was appointed. अरे वो तो ठीक है, 95 से 30 साल 2025 में होंगे, ठीक है, और आप 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, स्टे है नहीं। P11 की जो डेट है वो है 2003 की, My lord. 95 और 3 8 साल की तो नौकरी हुई, तो 30 साल कैसे होगा आपको नौकरी करते हुए? और पूर्व जन्म की नौकरी जोड़ दी गई है क्या? My lord, without holding any inquiry against me, without चलिए, petitioner's contention is that petitioner was appointed as a daily wager. Sorry, petitioner is also aggrieved of the order dated 31/12/2003/11/2004 passed by the registrar of Dr. Hari Singh God University Sagar, dispensing with his services in terms of the orders of the chancellor, invoking the provisions contained in section 12 within bracket 4 bracket close another bracket capital A bracket close of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973. Next paragraph. Petitioner's contention is that petitioner was appointed as a lab technician on a daily wage basis, wide order dated Annexure P2 with effect from 19/11/95 19/11/96, wide order dated 7/1/97. Thereafter, he was called for interview, wide communication dated 28/4/98, Annexure P3, but that interview was cancelled, wide Annexure P4, and then he was again asked to appear before the department on 11 wide communication dated 11/6/98, full stop. Thereafter, a show cause notice was given to the petitioner as contained in Annexure P8 by the Additional Secretary to the Governor, pointing out that all Class 3 and Class 4 posts are required to be advertised or names are required to be sponsored through the employment exchange, and then thereafter appointments are to be made through open selection. Full stop. Petitioner was appointed in Botany Department on 20 October 1995. He was appointed on a project. Project came to an end on 20 October 1996. Therefore, his services stood terminated automatically. Full stop. On 22/10/96, petitioner had given an application for appointment as lab technician to the head of the Department of Zoology. Full stop. Therefore, he was given appointment in the Zoology Department against a sanctioned budgeted post. Full stop. It is an admitted fact that a complaint was made against the petitioner and led by one Shri Suresh Singh Jat, but that was withdrawn wide Annexure P10, dated 10/3/2001. Full stop. Placing reliance on this withdrawal, it is submitted that impugned order could not have been passed. Next paragraph. Nobody is appearing for the respondent university, but perusal of Annexure P11 reveals that there is a procedure prescribed for appointment.
and admittedly that procedure was not followed while giving appointment to the petitioner on the post of lab technician, and therefore the chancellor of the university, who happens to be the governor of the state, had, after giving show cause notice and opportunity of hearing, passed the impugned order calling for impugned order setting aside the order of regularization of the petitioner and for taking action against the delinquent employees. Next para. There is no illegality in the said order in as much as petitioner has failed to show that his appointment was in accordance with the provisions contained in the regulations made in that behalf. Full stop. Admittedly, he was given a show cause notice. Full stop. Once the appointment itself is dehorsed the rules and regulations, then it is void ab initio. Full stop. A void appointment cannot be regularized by by the authorities, and therefore the impugned order by the chancellor setting aside the order of regularization and the consequential order passed by the registrar cannot be faulted with. Petition fails and is dismissed.